So then Radha had received more than 17 million views. Like, what's your reaction? And people are loving this song and the entire shoot, the vibe of the entire music video. I think I'm really very, very, very happy that people have loved this song so much. And मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब भी गाना आता है लोग प्यार देते हैं एंड सपोर्ट करते हैं. मैं जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. मैं ऑलवेज एक ही चीज़ बोलती हूँ, बट दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली फील. एंड मैं थैंक यू के अलावा कुछ कह नहीं सकती, बट आई कैन प्रॉमिस कि एवरी टाइम देयर इज़ अ सॉन्ग आई प्रॉमिस टू गिव माई 200% एंड मोर. Well, what sort of changes do you see in yourself, like the first time when you shot for your first music video, till the time like your journey? So, like, what sort of changes do you see yourself? I think I'm more confident now in my skin, in my art, in what I believe in. I think my opinions are sort of strong-headed now. I know what I want, and of course it'll get better with the older I get and the amount of songs that I do with the experience. But I feel like now I'm in a good place. पहले मुझे ऐसा I used to listen to everybody. अभी भी मैं सुनती हूँ, but now I know that मेरे लिए जो सही है मैं उन्हीं लोगों के ओपिनियंस कंसिडर करती हूँ. पहले मुझे आई फील लाइक पहले ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने धकेल दिया है और मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है. बट आई फील लाइक धीरे धीरे मैं सॉर्ट होती गई हूँ और मैं डेफिनेटली इन फ्यूचर बेटर होती जाऊँगी. बट नाउ राइट नाउ इन अ गुड प्लेस और आई नो व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक आई वांट टू डू. What's your creative process like? जैसे राधा के लिए भी जब आपने गाना सुना, then जो पूरा shoot plan हुआ, so like how was the entire process like when you first heard this song and मतलब किसको सुनाया, then approval लिया, then जो music video भी था सारा? Basically, Radha is a collaborative effort. I went to Abhijit. We made it from scratch. So Abhijit studio हम गए, मैं गई, हम यार कौन मैं गई और उसके बाद we started to he said just write down your thoughts. तो मैंने वो शुरू किया लिखना और फिर उन्होंने ट्रैक्स लेयर करने चालू किए और then we sort of came up with the verse, the starting जो मुखड़ा होता है गाने का, वो हमने किया. उसके बाद हम बिल्ड करते गए गाने को और कुणाल सर जो है उन्होंने बेसिकली ही अंडरस्टूड व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज इन टर्म्स ऑफ द वर्ड्स और जो मुझे कहना था एंड उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली लिखा. And उसके बाद we sort of sent it to Shivam. Shivam is an A&R in T-Series and उन्होंने फिर भूषण जी को सुनाया और खुद के भी इनपुट्स दिए and so ऐसे पूरा सिस्टम चलता है. पर उसके पहले of course my dad hears it and like तुम्हें उनका कान बहुत अच्छा है, so I always listen to what inputs he has to give. एंड ही ऑलवेज सेज कि अगर आप गाना गुनगुना सकते हो तो वो डेफिनेटली लोगों को समझ आएगा. सो एंड एज म्यूजिशियंस यू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड म्यूजिक, बट एज लेमन उनका ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इफ दे कैन सिंग इट देन अदर पीपल कैन सिंग इट. सो आई ऑलवेज make it a point कि मैं उनके opinions लूँ, important people. And of course Bhushan ji heard it and then he sort of helped us in terms of क्या मुखड़े में changes करने हैं. तो पहले melody थोड़ी सी अलग थी, फिर हमने उसको उसके हिसाब से ढाला and then the song was made. And then of course Karan has done a beautiful video, Rajat has choreographed it and Ravi sir is the DOP who's made me look so amazing and yeah, I'm so happy with Radha. Well, you have started with like soothing numbers, then फिर peppy numbers like the pop type of So do you plan it or just go with the flow कि जैसे अभी आपने राधा कर लिया तो you'll be like यार अभी एक soothing number करना है, so do you plan or just I don't plan, dude. I don't plan. I feel like I do what I feel in the moment. What how
and where I'm at in life, you know. ऐसा कुछ कभी कोई कुछ प्लान नहीं था, बट ऑफ कोर्स लाइक अभी राधा है तो नेक्स्ट गाना यू नो हम ऐसे प्लान करते हैं, बट नथिंग लाइक 3-4 गाने यू नो इज इन लाइन, क्योंकि आई फील लाइक I don't know how I'll feel, you know, at that time. So I want that excitement to be there in my life. That अभी अच्छा मैं राधा कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये कर रही हूँ, और फिर I don't know what I'm doing. So I'm going to look for, you know, songs. I'm sort of sit with someone and make it. Yeah. So I remember, I think that was the Vaste time promotion. I met you and the things that you have told, you know, confidence बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. So I can see that change, and you know, like you are very bubbly type, and you are like always talking, smiling, and you have already given so many hit songs. मतलब जो numbers में बहुत ज़्यादा है. If we see, like if you go by your age also, you know, how do you keep yourself grounded and approachable, and मतलब ज़्यादा fame के उसमें होता है ना कि when people feel कि यार numbers भी अच्छे आ रहे हैं, हाँ. एक वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, but still you feel very grounded. So like how do you keep yourself each time? I think it's a lot to do with upbringing. My parents are very. They taught me good values, and they always said, "Be a good person before you become anything else, and try to understand other people's emotions." And so I've never been someone who tries to throw a tantrum, or मैं अपना काम करती हूँ और लोगों से अच्छे से बिहेव करती हूँ, घर जाती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ. And you know which type of music genre that you want to explore, and जैसे आपने अलग-अलग टाइप के म्यूजिक वीडियोस बनाए, गाने गाए, which is that one thing and that strikes you in mind कि ध्वनि यार ये चीज़ अभी बाकी है, ये करना है. I think I really want to experiment with something with Afro beats, and I want to do something in jazz, but I don't know how I'll try to make it commercially viable because people also have to listen to it, and so I'll definitely, like, you know, always been interested in these genres. So आगे जाके I'll see if I can work with a composer and a lyricist and sort of come up with something with writers. Let's see. And what message and what advice do you want to give to the youngsters, aspiring singers who want to, you know, make name in this singing field? I just want to say that don't lose your identity. It's okay if you're getting influenced by others, but other artists, that is, and but do not try to copy someone completely, because it never works. It never ever works. You'll always be second option then. Message to your fans? Message to my fans is thank you, and I love you so much, and thank you for supporting Radha and all the songs that I've done so far. And we might not meet in person right now, but definitely I think once you know, Corona sort of ends, I'll definitely try to meet all of you all. I'll try to keep a meet and greet.